Hello, good morning everyone. Let's see, today we will discuss JEE PYQS of Fluid Mechanics Part 3. I heartily welcome to all of you. Let's see problem number 1. A fluid is flowing through a horizontal pipe of varying cross section with speed V meter per second at a point where the pressure is P Pascal. At another point where pressure is P by 2 Pascal, its speed is V meter per second if the density of the fluid is rho kg per meter cube and the flowing stream, then V is equal to कुछ इस तरह से आपको दिया। जस्ट सपोज वेराइंग क्रॉस सेक्शन है, आपको यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि जो पाइप है वो कुछ का जो क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है कुछ इस तरह से। पॉइंट 1 यहाँ पॉइंट 2 ले लो, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज 2, and the pressure at section 1 is P1 is equal to P, and another section at 2 their pressure is P by 2. Here fluid is flow with velocity V, and here with velocity at section 2 velocity of liquid is V. Here we can use applying Bernoulli equation, applying Bernoulli's equation cannot P1 plus rho g h1 plus 1 by 2 rho v1 square plus P2 plus rho g h2 plus 1 by 2 rho v2. But here we neglect the height of the pipe. So height at both point there will be equal. So we can cancel out this term rho g h1, it's cancel. And if we note here P1 minus P2 is equal to 1 by 2 rho. Here V2 is V square minus V square. एक बड़ा V एक छोटा V, ऐसे आप समझ सकते। Here we can put the value of P1 is the P and P2 is P by 2, then we will get 1 by 2 rho V square minus V square. Here P minus P by 2 is from P by 2, 1 by 2 rho V square minus V square. Here 2 is cancel. Then you can note that P by rho is equal to V square minus V square. And if we taken small v another side, it will become plus. And if we remove the square from big V, we will get under root P by rho plus V square. This is the final answer. You can see here in the problem there will be option D. It is the correct P by rho, under root P by rho plus V square. चलिए, तो कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। Let's see, move on another problem. This problem, the data is given. This is in front of you. Water flow in a horizontal tube. Pressure of water changes by 700 Newton per meter square between A and B, where the area of the cross section are
40 centimeter square and 20 centimeter respectively. Find the rate of flow of water to the tube. चलिए पहले कुछ समझ लेते हैं बातें जो हमें यहाँ दी हुई है, फिर इसके बाद ये आसान हो जाएगा। जस्ट सपोज ये है एरिया A1, दिस इज द 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area at point B, this is 20 centimeter square. Here pressure is P1 and here pressure is P2. This is given. Pressure difference P1 minus P2. It is given. This is 700 Newton per meter square. So it is also based on बर्नौली इक्वेशन। अगर आपको बर्नौली इक्वेशन पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो आपके लिए प्रॉब्लम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इज वेरी इजी, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ आप देखो तो एरिया इज लार्ज, A1 इज लार्ज। सिंपल है कि यहाँ वेलोसिटी V1 जो होगा वो कम होगा। अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर P1 इधर ज्यादा होता है। और सेक्शन B जो है, इट इज अ नैरो सेक्शन एज कंपेयर टू A, सो एरिया ऑफ द B cross section which is less as compared to section A, so that velocity at section B which is more as compared to section A, there will be pressure is less as compared to section A at a B section. चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट I applying continuity equation also here. Continuity equation says that it says that A1 V1 is equal to A2 V2, and if we use V1 by V2, then is equal to the A2 by A1, so A2 by A1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। सेम ईयर में यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2 मान लेता हूँ, तो हाइट की वजह से जो एनर्जी होगा वो दोनों का इक्वल रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो P1 यानी कि सेक्शन ए पे प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो हम P1 माइनस P2 लिखेंगे, तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखना यहाँ पे ये है कि हमें वेलोसिटी नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे एरिया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलिए हाँ, तो फाइंड द रेट ऑफ फ्लो पूछा है हमें, वेलोसिटी कोई भी निकालना पड़ेगा। तो P1 माइनस P2 हमें यहाँ दिया है 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये रहा प्रेशर डिफरेंस, दिस इज द 700 1/2 रो यानी 10⁻³ एंड इफ वी टेक कॉमन V2 स्क्वायर, then we cannot here V1 square by V2 square. Here 2 moving with 7 and it's become 14, and this 10⁻³ and here is equal to 1000 V2 square 1 minus, and this is what A2 is 20 and A1 is 40. Then I will put the value of this here, this will become 1/2. If we put the value of V1 by V2 1/2, then the square of V1 by V2
square, so it will become 1 by 4. Now this 2 0 cancel out, ये 10 डिवाइड में जाएगा 14 का, तो it will become 1.4 is equal to V2 square 3 by 4. 4 सामने मल्टीप्लाई होगा, 4 minus 1 upon 4. So 4 minus 1, 3 by 4. And if we multiply 4 by 3, then you will get approximate answer 1.862. 1.862. And if we remove the square at another side, then the under root of 1.862, you will get 1.37 meter per second. This is the final answer. And we the question is asked to find the rate of flow of water through the tube. Then let's see on a next slide. Problem is asked, what is the flow rate? Flow rate के लिए आप लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2. चलिए, हमें V2 मिला है, V2 यानी कि जो नैरो एंड पे वेलोसिटी, और वहाँ एरिया अगर आपको पता हो तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था. मैं 20 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें. 20 इंटू 10⁻⁻⁴ and velocity is 1.37. You can solve it. It will become 2.74 into 10⁻³ ये मीटर क्यूब पर सेकंड हुआ. और हमें अगर सेंटीमीटर में चारों ऑप्शन दिए हैं तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ to 10⁻+6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. Then we will get final answer 2.74 into 10⁻³. It will become 2740 centimeter cube per second. This is the final answer of this question. Let's see. The option is correct option कौन सा रहेगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है 2740, यानी approximate it will match with the 2720. Correct option is B. Correct option is B. Chalo, I hope are you all understand. Let's move on another problem. In this problem, there will be data is like that an ideal fluid flow, and its flow it's like a laminar flow through a pipe of non-uniform diameter. Non-uniform, that means the diameter of pipe, it is changes the maximum and minimum diameter of the pipe. This is the maximum diameter and this is the minimum diameter of this pipe, 4.8 centimeter and 6.4 centimeter respectively. The ratio of the minimum and the maximum velocity of fluid in this pipe. So you can see that here problem data is like that. There will be a pipe and the diameter of pipe is non-uniform. Maximum diameter, this is 0.1, this is 0.2. Diameter 1 is given, this is 6.4 centimeter, and diameter of narrow end, it is also given, its diameter is 4.8 centimeter. Now according to continuity equation and Bernoulli equation, we know that A1 is more area, so here velocity is minimum, less, and here area A2 is less, so from the section 2 velocity of liquid is maximum. The question is asked the ratio of
V मिनिमम अपॉन V मैक्सिमम, ये रेशियो हमें पूछा है। चलिए, आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन का डेटा समझ में आ गया होगा पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको अप्लाई करना है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 is equal to A2 V2. Here V1 is the minimum velocity, so we take V1 by V2, then it will become A2 by A1, या आप इसी को ही बोल सकते हो V minimum upon V maximum is equal to pi D2 square by pi D1 square. Pi cancel out. D2 is what? 4.8 upon 6.4 whole square. Here you can cancel out 16 threes are 48 and 16 fours are 64, यानी कि 9/4. This is the ratio of minimum and maximum velocity. 9/16, 9/16 स्क्वायर करना है आपको। 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो इसी के साथ एक प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। आंसर आप देख सकते हो 9/16। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट it says that water from a tap emerges vertically downward within initial speed 1 meter per second. The cross-sectional area of the tap is 10 raised to minus 4 meters square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and that of flow is streamlined. The cross-sectional area of the stream 0.15 मीटर बिलो द टैप वुड बी। तो अगर आप देखो तो आपको कुछ इस तरह से दिया हो कि एक टैंक है। क्या दिया है? एक टैंक है, यहाँ वाटर फील है, ठीक है, और यहाँ एक हॉल है। वो जो हॉल है इसका आपको एरिया भी दिया है, और जैसे जैसे यह लिक्विड नीचे जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। वेलोसिटी बढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ये जो सेक्शन है वो नैरो, मान लो पाइप के अंदर हमने पढ़ा है कि भाई पाइप है तो यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम होगा। फिर जब नैरो एंड पे पहुँचोगे तो वहाँ एरिया कम हो जाता है तो वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो सेम ये पाइप में से लिक्विड बाहर आ रहा है, पाइप में से नहीं, हॉल में से। हॉल इज एट सम हाइट, वो हाइट भी आपको दिया है, हाइट एट 1.5 मीटर। तो यहाँ जो है हाइट बिलो 0.15 मीटर, हाइट कितना दिया है? 0.15 मीटर। 0.15 मीटर पे आपको बताना है क्रॉस सेक्शनल एरिया। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो द टैप वुड। एरिया क्या होगा इसका? E2 बताना है। और यहाँ का एरिया जो होल है वहाँ एरिया दिया है 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर and velocity it is also given, this is 1 meter per second। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। अगर आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है तो A1 V1 is equal to A2 V2, तो यहाँ की अगर वेलोसिटी आपके पास आ जाए तो आप आराम से फाइंड कर सकते। तो वेलोसिटी यहाँ फाइंड करना है, तो V2 आपको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। V2 स्क्वायर हमें फाइंड करना है, V1 स्क्वायर साइड गया, प्लस 2 G यानी 9.8 हम कंसीडर करते हैं,
या आप 10 भी ले सकते हो राउंड फिगर में अगर। एंड डिस्टेंस इज 0.15। हाइट, कितनी हाइट से लिक्विड यहाँ जब 0.15 मीटर बिलो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वहां इसका वेलोसिटी कितना होगा, v2 होगा। तो v2 स्क्वायर, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस, यहाँ आप लिख सकते हो 1.2, 1.5, 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1.5 इंटू 2 इट विल बिकम 3 अंडर रूट में 4, यानी ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। So now according to continuity equation, according to continuity equation, a1 v1 is equal to a2 v2, and we want to find area at a narrow section a2. So a2 is equal to a1 v1 upon v2. a1 is 10 raised to minus 4, v1 is 1, and v2 is 2. So it will become 0.5 into 10 raised to minus 4 meter square. And if you simplify more, then you will get 5 into 10 raised to minus 5 meter square. This is the correct answer. Here you can see the correct option is D, 5 into 10 raised to minus 5 meter square. तो इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव ऑन अनदर प्रॉब्लम। Problem is said that water from pipe is coming. Water from a pipe is coming at a rate of 100 liter per minute. If the radius of the pipe is 5 centimeter, the Reynolds number for the flow is of the order of। Reynolds number फाइंड करना है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इज ऑल्सो आस्क्ड इन 2019। कौन से ईयर में पूछा गया था? 2019। यहाँ पे आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला जानते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई ईटा। रो वी डी बाई eta, where rho is the density of liquid, v is the velocity of liquid, d is the diameter of the pipe, and eta is the viscosity of liquid। अब यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, विस्कोसिटी दिया है, एंड डायमीटर भी दिया है, रेडियस दिया है, तो इससे आप डायमीटर भी निकाल सकते हैं। बट आपको वेलोसिटी नहीं दिया है, तो वेलोसिटी के लिए आपको फ्लो रेट पता होना चाहिए। फ्लो रेट यानी व्हाट? तो ये जो आपको दिया है 100 लीटर पर मिनट, इट इज द फ्लो रेट। इन 100 लीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करिए तो दिस विल बिकम 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड मिनट को सेकंड में तो 61 मिनट यानी 60 सेकंड। 0 0 कैंसल, then you will get 1/6 into 10⁻² meter cube per second. This is the flow rate। अब हम जानते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी, फ्लो रेट यानी व्हाट? एरिया इंटू वेलोसिटी, and we want to find velocity, so we make the subject as a v, and this is q by area। q by area, area q is 1/6 into 10⁻² upon area is the pi r square, to 10⁻² upon 3.14, r is the 5 centimeter, r is given, then it will become 25 into 10⁻⁴, because r is equal to 5 centimeter. Convert into meter, then it will become 5 into 10⁻² meter. Put the values
we will get velocity here. And we know formula of Reynolds number. This is rho Vd by eta. The density of water is 10 raised to 3. Velocity, here you can put this all formula 1 by 6 into 10 raised to minus 2 upon 3.14 into 25 into 10 raised to minus 4. Diameter is double of radius, then it will become 5 into 2, 10 centimeter. 10 centimeter yani 10 into 10 raised to minus 2, and eta is 1 millipascal into second. So we can note down 10 raised to minus 3. Here 10 raised to minus 2 and this 10 raised to minus 2, it will become 10 raised to minus 4, and this is cancel out. Here 10 raised to minus 3, it will moving upward, then it will become 10 raised to 6. 25 into 6, it become 150. So we can note 150 into 3.14 into 10 की पावर 6. 6 और 1 और है तो ये 7 पावर हो जाएगा. कितना? 7. It will become 7 power of 10. If we solve this, then we will get 2 into 10 raised to 4 something answer. Then the correct option here is D. D is the correct option this problem. Let's move on another problem. In this question, the data is given like water flow into the large tank with flat bottom at the rate of 10 raised to minus 4 meter cube per second. This one is nothing like, it's just sign meter cube per second. Water is also leaking out of whole of area 1 centimeter square as its bottom. If the height of the water in the tank remains steady, then this height is. So this is also a good problem. Let's see how it will solve. Here you have given one tank, and this tank is filled with water, and the one tap is here. The water is coming from this tap at a constant rate like this, and this rate is given, this q is 10 raised to minus 4 meter cube per second, and its height is something h. This height is asked to find us, and the one hole is given at the bottom of the tank. Here there will be one hole, and the water is leaking out from this hole with velocity v. The area of this hole is given, this is 1 centimeter square. That means this is the 10 raised to minus 4 meter square. Here in the problem asked to find the height of this water level in the tank. The height of the water in the tank remains steady, then this height is. You can see here the height is maintained when the flow rate is coming from this tap, which is equal to the flow rate coming out from the hole at the bottom of the tank. Both flow rates are same, then we can say the height level is maintained. So here we also use the continuity equation, and the flow rate q is equal to a1 v1 is equal to a2 v2. This will remain same. If you see here, the flow rate is the constant, it's a fixed value and it is given, and problem is asked to height. So we
flow rate, it is 10 raised to minus 4. Area of the hole is, it is also given 10 raised to minus 4, and velocity is under root 2g. This will be cancel out. 1 square is equal to 2gh. h is equal to 1 by 20. 20 यानी 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, विल गेट 5 by 100 यानी 0.05 meter. If we convert this into centimeter, it comes 5 centimeter. So approximate answer will be matched with correct option A. Option A is given 5.1 centimeter. So solution of this question is like that. Let's move on another questions. Let's see. The top of water tank. The top of water tank. The top of water tank is open to air. And its water level is maintained. It is giving out 0.74 meter cube water per minute through a circular opening of 2 centimeter radius in its wall. The depth of the center of the opening from the level of water in the tank is close to. Same here is also asked to find the height. Data is given like that. There will be a tank. It is filled with water, and there will be a hole from a side wall, and water is coming out from this hole, and this hole is at a h depth from the free surface of the liquid. And ask the height where we will do the hole from the open surface. The water level is maintained. Water level is maintained. सेम जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी की तरह कुछ का भी सॉल्यूशन आएगा. यहाँ पे भी फ्लो रेट दिया है और हाइट ही पूछा है. चलिए, तो फर्स्ट हम इसमें भी अगर लॉजिक दौड़ाए तो यहाँ वेलोसिटी 0 है लिक्विड की. जब यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है तो वेलोसिटी v है. तो हियर वी कैन ऑल्सो यूज v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad and v is become under root 2gh. Under root 2gh. And same here, area, the circular opening, it is even. Area pi r square यानी 3.14 into 4 into 10 raised to minus 4 meter square. Area of this hole it is given. चलिए, according to continuity, equation, q is equal to a1 v1 is equal to a2 v2. ये formula use होगा. And v2 is what? q by a2. q is given 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट है, तो ये सेकंड में आ गया. चलिए, फिर बात करते हैं हम एरिया की. एरिया इज व्हाट? एरिया इज द 3.14 इंटू 10 रेज टू माइनस 24. और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 24 इंटू 24 इंटू 3.14 यानी कि पाई का स्क्वायर. तो 3.14 का स्क्वायर, आप इसको पाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं. कुछ इस तरह से डेटा आपका बचेगा. पाई स्क्वायर यानी यहाँ से अगर एक जी भी कैंसिल कर सकते. यहाँ पाई स्क्वायर यानी ये 10 होता है, ये भी 0 कैंसिल. तो हमारे पास जो डेटा है उसमें बच रहा है h is equal to 74 into 74. It will become 5476 upon 24 into 24 और a 2. इसे आप सोल्व करते हो तो इट विल
comes something 2 into 576. सॉल्व करने से आंसर आता है 4.85 मीटर. द करेक्ट दिस आंसर इज मैच विद द ऑप्शन बी. So B is the correct answer, 4.8 meter. So I hope कच्चा पार्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. Let's move another problem. In this problem, the data is given like that. When an air bubbles of radius r rise from the bottom to the surface of lake, its radius become phi r by 4. Phi r by 4, taking the atmospheric pressure to be equal to 10-meter height of water column. Taking the atmospheric pressure to be equal to 10-meter height of water column, the depth of lake would be approximately will be the depth. Problem is like that. Just suppose this is the lake. This is the lake. And the one air bubble is at a depth, some depth. Just suppose this is the depth h. And its radius, it is r. R1 is what? This is the, when it comes upward and come to the surface, its radius, r2 is become pi by 4r. Pi by 4r. So the what is the height of this lake? Height is asked. And another data is also given, the 10-meter height of water column. This is equal to the atmospheric pressure. यानी जो हम atmospheric pressure लेते हैं ना, P नोट, this is what rho g h होता है ना, तो rho g 10, ये हमें दिया है क्वेश्चन. चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. आगे यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पता हो, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, कि जो पूरी प्रोसेस हुई इसमें हम ये मान लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो इट दिस प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस. द आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 is equal to P2 V2, ऐसा लिखा जाता है. प्रेशर एट P नोट इज, दिस इज द rho g 10. Now P1, volume V1 4 by 3 pi r cube, P2 into 4 by 3 pi 125 by 64 r cube. R cube cancel, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cancel. Then P1 by P2 is 125 by 64. And if we see here, P1 is the pressure at a h depth. And P1 is what? P naught plus rho gh, and P2 is the pressure at the surface of it. This is 125 by 64. Now here the P naught is the rho g 10 plus rho g h upon rho g 10 equal to 125 by 64. Rho g it cancel out. 64 is multiplied with 10 and h, this will become 640 plus 64h and 1250. 10 it's multiplied with 125. Then you can get the 64h is equal to 1250 minus 640. Then you will get 620, 625. Uh, 640. This will become 610 upon 64. Then it will come approximate height is 9.53.
meter. This is the correct answer. And you can see here option number D is the correct answer. Two, two tubes of radius R1 and R2, two tubes radius R1 and R2 and length L1 and L2 respectively are connected in series. A liquid flow through each of them in streamline condition. P1 and P2 are pressure differences across the two tubes. If P2 is 4P1 and L2 is L1 by 4, then the radius R2 will be equal to. Here the problem is like that. Just suppose two pipes connected with each other, and here the pipe, the liquid is flow due to pressure difference. There will be pressure is P1 and another pressure is P2, and the data is also given. The P2 लेंथ L1 L2 यहाँ रेडियस R1 है, यहाँ रेडियस R2 है, प्रेशर P2 इज 4P1, यहाँ प्रेशर 4P1 है, तो हमें ये R2 फाइंड करना है। लेंथ के बारे में कुछ बात की है, दिस इज L1, L2 इज L1 by 4 है। तो ये डेटा हमें दिया हुआ है और इसमें से हमें बताना है कि रेडियस ऑफ सेकंड पाइप व्हाट। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको फ्लो रेट का फॉर्मूला बताओ, फ्लो रेट रिमेन constant in a series combination। तो हमने फ्लो रेट का फॉर्मूला पढ़ा है, V1 इज इक्वल टू V दोनों भाई, जितना यहाँ से वॉल्यूम एंटर हुआ उतना ही लीव भी करेगा। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पाई E1 R1 रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा into L1 is equal to pi P2 R2 raised to 4 upon 8 eta into L. 8 eta cancel, pi it is also cancel, and R2 raised to 4 is equal to P1 by P2 into L2 by L1 to R1 raised to 4. So P1 is the P1, P2 is the 4P1, L2 is equal to L1 by 4. This is R1 raised to 4. Here L1 cancel, P1 it is also cancel. So R2 raised to 4 is equal to R1 raised to 4 upon 16. If we remove the fourth power of R2, another side the power of the section is become 1/4. So we can note this R1 by 2 is the correct option. Similar like D, so D is the correct आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।